Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Bhaktivinoda Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivsadi Gaura Bhaktivinoda Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivsadi Gaura Bhaktivinoda Shri Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesh Gopi Kanta Radha Kanta Namostute Tapt Kanchan Gorangi Radhe Vrindaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye वो श्री राधे गुरु कानंद भगवान की जय हरे कृष्णा Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna everyone. Hare Krishna Soham. Hare Krishna. Shivam, how are you? Good, how are you? Good. All right, happy Ekadashi to everyone. Today is also Ekadashi. And कल हम लोग श्लोक 18 पढ़ रहे थे 18th श्लोक of chapter 9 cantos 2. We are on chapter 9 and there are 10 chapters in this canto. So and we are reading 19. So we read yesterday, we read the श्लोक 18 जहाँ पर Lord Shri Krishna Lord Brahma ji को दर्शन देते हैं. Yeah. So then what happens is, like we saw yesterday, Rish Tanu hai, Prem Bhara Sru Lochana hai. Lochana is name, eyes. So Lord Brahma, thus seeing the personality of Godhead in his fullness, was overwhelmed with joy within his heart, and thus in full transcendental love and ecstasy, his eyes filled with tears of love. Yeah. And his eyes filled with tears of love. And then he bowed down before the Lord. Yeah. Namam Padam Bhujamasya, lotus feet of Lord, he bowed down. And what is being said in Srimad Bhagvatam is, this is the highest perfection of life for the living being, which is called Paramhans. Yeah, that's the position of Paramhans when you can get self-realized and get Lord Shri Krishna's darshan. Yeah, we'll continue from here. Shlok 19, Anilji. Tam priyamanam samupasthitam kavim praja visarge nij shasanarhanam bhavash ishasth smitasho chishagira priya priyam pritamana kares prashna. And seeing Brahma present before him, the Lord accepted him as worthy to create living beings, to be controlled as he desired, and thus being much satisfied with him. The Lord shook hands with Brahma and slightly smiling addressed him thus. Hare Krishna. Yeah, so here Lord Shri Krishna is now speaking on the next shlok. And we'll just read this much. So Brahma also does his duty very perfectly, not only by generating the living entities, but also by spreading party for reclaiming the fallen souls. The party is called the Brahma Samapadaya, and any member of this party date and naturally engage in reclaiming the fallen souls back to Godhead, back home. The Lord is very much anxious to get back his parts and parcels as stated in the Bhagavad Gita. Stated in the Bhagavad Gita, no one is more dear than the one who takes the task of reclaiming
the fallen parts, Fallen souls. the fallen souls back to Godhead. Hare Krishna. Hare Krishna, yeah. So, so Lord Brahmaji say, like we saw, is a Lord Brahma Sampradaya, right? So from Lord Brahma, we saw Devrishi Narad, Vyasdev ji, Sukhdev Goswami ji, Madhavacharya, right? So on and so forth, up to Swami Prabhupada. And then we saw with Chaitanya Mahaprabhu, right? And Chaitanya Mahaprabhu is actually avatar of Radha Krishna himself, right? And so Swami Prabhupada, and what is being mentioned here is that no one is more dear than the one who takes the task of reclaiming the fallen souls back to Godhead. Fallen souls are all the conditioned souls, like all of us. And our task, the Paramhans position is really go back to Godhead. So anyone who is doing this, like Swami Prabhupada, is the most dear to Lord Sri Krishna. So now Lord Sri Krishna is him speaking. Sri Bhagwan Vach. Rinaji? भगवानुवाच त्वयाहं तोषितः सम्यग् वेदगर्भ शुश्रूषया शिरमृतेन तपसा दुस्तोषः कूटयोगिनाम्. The beautiful personality of Godhead addressed Lord Brahma. O Brahma, impregnated with the Vedas, I am very much pleased with your long accumulated finance with the desire for creation. Hardly am I pleased with the pseudo mystics. Hare Krishna. Yeah. So Lord Sri Krishna, Brahmaji ko darshan deke, and of course he's saying that you are Veda Garbhasi Srikshya, yani ki, of course, the Lord Brahmaji is impregnated with the Vedas. Yeah. And of course, we know Brahmaji did the tapasya, right? Tap, chiram britem tapsa, for a long time. Ajay? वरं वरे भद्रं ते वरेशं माभिवाञ्छितं ब्रह्मच्छेय परिश्रमः पुंसा मद्दर्शनावधि. I wish you good luck, O Brahma. You may ask from me, the giver of all benedictions, all that you may desire. You may know that the ultimate benediction as the result of all penances to see me by realization. Hare Krishna. Hare Krishna. So Bhagwan Sri Krishna bol rahe hain Brahma ji ko ki now you can ask me like all that you may desire. Why? Varam varaya. Bhadram te, right? And who is saying this? Varesham. So Varesham, who is the Varesham? He is the giver of all benediction. That is Lord Sri Krishna. But he also saying that the ultimate benediction is to see Lord Sri Krishna by realization. That's the ultimate benediction, all of us should seek. Tarun? Manishitanam nanubhavam mama lokavalokanam yadupashrutya rahasi chakrata param tapam. The highest perfectional ingenuity is the personal perception of my abodes, and this has been possible because of your submissive attitude in the performance of severe penance according to my order. Hare Krishna. Krishna. Yeah, according to my order, because remember, Brahmaji heard two words, te and pe, and two letters, right? Tap. And then he did paramam tapaha. Sachin? प्रत्यादिष्टं मया तत्र त्वयि कर्म विमोहिते तपो मे हृदयं साक्षादात्माहं तपसो अनघ.
O sinless Brahma, you may know from me that it was I who first ordered you to undergo penance when you were perplexed in your duty. Such penance is my heart and soul, and therefore penance and I are non-different. Hare Krishna. Hare Krishna. Yeah? Sakshadat Maham. Yeah, I think this is a nice part. Let's read this paragraph, Shiva. The penance by which one can see the personality of Godhead face to face is to be understood as devotional service to the Lord and nothing else, because only by discharging devotional service and transcendental love can one approach the Lord. Such penance is the eternal potency of the Lord and is non-different from him. Such acts of eternal potency are exhibited by non-attachment from material enjoyment. The living entities are engaged in the conditions of material bondage because of their propensity for overlordship. But by engagement in the devotional service of the Lord, one becomes detached from this enjoying spirit. The devotees automatically become detached from worldly enjoyment, and this detachment is the result of perfect knowledge. Therefore, the penance of devotional service includes knowledge and detachment, and that is the manifestation of the transcendental potency. Hare Krishna. All right, so this explains how the transcendental potency grows. Rinaji? सृजामि तपसे वेदं ग्रसामि तपसा पुनः विभर्मि तपसा विश्वं वीर्यं मे दुश्चरं तपः. I create this cosmos by such penance. I maintain it by the same energy, and I withdraw it all by the same energy. Therefore, the potency is penance only. Hare Krishna. Krishna, right? Srijami. So that's what Lord Sri Krishna is telling Lord Brahma. Anil? भगवन् सर्वभूतानामध्यक्षो वस्थितो गुहां वेदह्य प्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन चिकीर्षतम्. Lord Brahma said, O personality of Godhead, you are situated in every living entity's heart as the supreme director, and therefore you are aware of all endeavors by your superior intelligence without any hindrance whatsoever. Hare Krishna. Hare Krishna, right? So now Brahmaji is saying, right? Lord Krishna first said that, and then now Brahmaji is saying is Bhagwan Sarva Bhutanam Adaksha, right? Sarva Bhutanam, like every living entity's heart as the supreme director. Who is situated in there? In the heart? Everyone's heart? Lord Vishnu. Lord Vishnu, right? Lord Vishnu, Lord Sri Krishna, right? Yes. Situated in every living entity's heart as the supreme director. And that is why the Lord is aware of all the intelligence without any hindrance about everyone. It has good, nice purport. Just read this. Soham is there? I think he slept. Okay, Shivam, you can read this. The impersonalists recommend that one should become desireless, and the others recommend banishing desires altogether. That is impossible. No one can banish desires altogether because desiring is the living symptom. Without having desires, a living entity would be dead, which he is not. Therefore, living conditions and desires go together. Perfection of desires may be achieved when one desires to serve the Lord, and the Lord also desires that every living entity banish all personal desires and cooperate with his desires. Hare Krishna. Hare Krishna. Tarun? That is the last instruction of the Bhagavad Gita. Brahmaji agreed to this proposal, and therefore he is given the responsible post of creating generations in the vacant universe.
Oneness with the Lord, therefore, consists of dovetailing one's desires with the desires of the Supreme Lord. That makes for the perfection of all desires. Hare Krishna. Hare Krishna. Ajay? Can you? Yeah. The Lord as the super soul in the heart of every living being knows what is in the mind of each living entity, and no one can do anything without the knowledge of the Lord within. By his superior intelligence, the Lord gives everyone the chance to fulfill his desire to the fullest extent, and the resultant reaction is avoided by the Lord. Hare Krishna. Hare Krishna, right? So everyone, whatever they wish, they get, right? Remember in one of the earlier shlokas we read, like if you desire to be demigod and if you start doing karmas like that, you will be a demigod, right? A devata. If you desire to be somebody else, you will be a tiger, like whatever, right? Whatever wish you can be. Ravi, read Karma. तथापि नात्मानस्य नाथाय नाथेदं परावरे यथा रूपे जानीयाम ते त्वरूपिणम्. In the spirit of that, my Lord, I am praying to you to kindly fulfill my desire. May I please be informed how, in spite of your transcendental forms, you assume the mundane form, although you have no such form at all. Hare Krishna. Hare Krishna. So who is saying this? Who is Lord Brahma. Lord Brahma, yeah? To Lord Brahma, to Lord Shri Krishna, is that I am praying to you. And what is Brahma asking? In spite of your transcendental form, how do you assume the mundane form? Although you have no such mundane form. How does that happen? Give me the answer to that question. Sachin? यथात्मया योगेन नाना शक्त्युपबृंहितं विपुल विलुम्पन विसृजन गृहन् बिभ्रदात्मना. And please inform me how you, by your own self, manifest different energies for annihilation, generation, acceptance, and maintenance by combination and permutation. Hare Krishna. Hare Krishna, right? So Brahma ji push hai, explain your different energies. And just Shivam, read this. The whole manifestation is the Lord himself by the fusion of his different energies only, namely the internal, external, and marginal, just as the sunlight is the manifestation of the energy of the sun planet. Such energy is simultaneously one with and different from the Lord, just as the sunshine is simultaneously one with and different from the sun planet. Hare Krishna. Right. Ravi? Yes. The energies are acting by combination and permutation by the implication of the Lord. And the acting agents like Brahma, Vishnu, and Shiva are also different incarnation of the Lord. In other words, there is nothing but the Lord, and still the Lord is different from all such manifestive activities. How it is so will be explained later on. Hare Krishna. So later on, और detail में देखेंगे how Lord, everybody incarnation of Lord, but still he is different, right? Like the sun and the sun rays.
So we'll see that. Yeah. We are going to pause here actually, and we have 9 minutes. So this Sunday is Holi, so happy Holi to everyone. First of all, Happy Holi, everybody. Everyone. Happy Holi. and also it is Gaur Purnima. Yeah, like Chaitanya Mahaprabhu's, it's the Gaur Purnima, and you know, like he appears once. We have seen that, and he's like none other than Radha Krishna's Your voice avatar. is breaking up. Okay, is this better? Yeah. It was just a hiccup for a second. Now it's okay. Yeah, like I was saying, Chaitanya Mahaprabhu is Radha Krishna's avatar. So we are just going to hear the story about Lord Sri. I mean, what is Gaur Purnima is what we are going to hear. Yeah, is that good? Today, because this Sunday is holy and that's Gaur Purnima. I think it's good to know that. So let's, any other comments or anything? Cool. So let's hear this. हरे कृष्णा। आप सभी को श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतरण दिवस गौर पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। गौर पूर्णिमा श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस है, जो फागुन महीने की पूर्णिमा की तिथि है। इसी तिथि पर श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में प्रकट हुए थे। उनके पिता का नाम श्री जगन्नाथ मिश्र व माता का नाम श्रीमती शची देवी था। उन्होंने हरि नाम संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ किया और इसी के प्रचार हेतु कुछ समय के पश्चात संन्यास आश्रम ग्रहण करने के बाद वे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहलाए। 48 वर्षों तक अपनी दिव्य लीलाएं प्रदर्शित करने के पश्चात वे पुरी में अंतर्धान हो गए। भगवान अनंत हैं, वह ऐसी ही उनकी लीलाएं भी अनंत हैं, जिनका ना तो कोई और है और ना ही कोई छोर। और आज हम उस विषय पर बात न करके ये जानने का प्रयास करेंगे कि चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य इतना दुर्लभ क्यों है, किस तरह से है। तो इसकी शुरुआत हम करेंगे इस युग से, जिस युग में हम रहते हैं, यानी कलयुग से। थोड़ा सा गहराई से समझने का प्रयास कीजिएगा। हमारे शास्त्र बतलाते हैं कि इस युग यानी कलयुग की अवधि है 4,32,000 वर्ष। उसके पहले आता है द्वापर युग, जिसकी अवधि होती है कलयुग की दुगनी। द्वापर से पहले कौन सा युग? त्रेता, और उसकी अवधि होती है कलयुग की 3 गुना ज्यादा। और फिर त्रेता से पहले होता है सतयुग, जिसकी अवधि होती है कलयुग की 4 गुना ज्यादा। तो कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग, चारों को मिलाकर उनकी अवधि, उनका समय कितना हुआ? कलयुग गुना 10। देखिए, कलयुग 1, द्वापर 2 कलयुग, त्रेता 3 कलयुग, सतयुग 4 कलयुग, तो टोटल 4 + 3 + 2 + 1 हुआ 10। तो चारों युगों का समय यानी अवधि हुई कलयुग की अवधि का 10 गुना, जिसे कहते हैं एक चतुर्युग। और इसका समय हुआ 43,20,000 वर्ष। ये अवधि हुई एक चतुर्युग की। तथा ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 ऐसे चतुर्युग होते हैं, और एक चतुर्युग का समय है 43,20,000, तो 1000 गुणा इतना हुआ 432 करोड़ साल। और हर एक कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर में भगवान के कम से कम एक अवतार होते हैं, जिनको युग अवतार कहते हैं, जो उस युग के धर्म को स्थापित करने के लिए आते हैं। इसके अतिरिक्त तो भगवान के अनेक तरह के अवतार हैं, जैसे लीला अवतार, मनवंतर अवतार, शक्त्यावेश अवतार, वे भी आते हैं। तो इस तरह से ब्रह्मा जी के एक दिवस में कितने अवतार आते हैं भगवान के, इसकी हम गणना कर ही नहीं सकते। परंतु कुछ लोगों में यह भ्रांति होती है कि भगवान के केवल 10 ही अवतार हैं, और उनमें भगवान श्री कृष्ण भी एक अवतार है। और कुछ लोगों में तो ये भ्रांति है कि श्री कृष्ण सिर्फ 5000 साल पहले ही आए थे, उससे पहले उनका कोई भी अस्तित्व था ही नहीं। परंतु ऐसा नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं कि इन्हें अवतार क्यों कहते हैं। तो अवतरति इति अवतारः, क्योंकि वे भगवान के धाम से आते हैं, इसलिए अवतार कहलाते हैं। तो जो भी
भगवान के रूप, भगवान के धाम से उतरकर इस भौतिक जगत में आते हैं उनको अवतार कहते हैं। और ऐसे अनगिनत असंख्य अवतार हैं भगवान के जो वैकुंठ लोक में निवास करते हैं। और ये सारे अवतार उत्पन्न कहाँ से होते हैं, इनका स्रोत कौन है? तो इनके स्रोत हैं भगवान श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 3 अध्याय में वर्णन है कि एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। अर्थात भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। वह अन्य सभी अवतार उनके या तो अंश हैं या कला हैं। कला यानी अंश के भी अंश। लेकिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं अवतार नहीं है, वे अवतारी हैं। तो अवतार तो अनगिनत हैं, लेकिन उनके मूल सिर्फ एक, श्री कृष्ण। आप सोच रहे होंगे कि ये सब क्या चल रहा है, तो इसका खुलासा आगे होगा। सामान्यतया ब्रह्मा जी के एक दिन में उनका एक अवतार एक ही बार आता है, परंतु कभी कभी एक बार से अधिक बार भी आ सकते हैं। 1000 चतुर्युग में भगवान का एक अवतार एक बार ही आता है। उसी तरह स्वयं अवतारी अर्थात भगवान श्री कृष्ण भी ब्रह्मा जी के एक दिन में केवल एक बार ही आते हैं। जैसे हमारी भी एक दिनचर्या होती है, एक दैनिक क्रम होता है, समय पर उठना, भोजन करना, ऑफिस जाना और फिर ऑफिस से वापस घर आना। तो हर दिन में कुछ निहित कार्य होते हैं जिन्हें एक निर्धारित समय पर हमें करना होता है। उसी तरह भगवान भी निर्धारित समय पर क्रम अनुसार आते रहते हैं। और इन ब्रह्मा जी के एक दिवस में जिसमें 1000 चतुर्युग हैं, उसमें 14 मनु होते हैं और इसमें 7वें मनु है वैवस्वत, जिनके समय भगवान श्री कृष्ण आते हैं। अब इसे संक्षेप में समझते हैं कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग होते हैं, उनमें से 7वें मनु के 28वें चतुर्युग के द्वापर युग के अंत में भगवान श्री कृष्ण आते हैं। और ब्रह्मा जी का एक दिन यानी 432 करोड़ वर्ष। तो 432 करोड़ साल में भगवान श्री कृष्ण एक बार आते हैं, जो हमसे सिर्फ 5000 साल पूर्व आए हैं। और इसी 28वें चतुर्युग के कलयुग में आते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, जो हमसे केवल 500 वर्ष पूर्व आए हैं। तो जरा सोचिए कि 432 करोड़ वर्ष में 500 वर्ष क्या है? कुछ भी नहीं। तो हमारा कितना सौभाग्य है कि उनके आविर्भाव के इतना निकट हमारा जन्म हुआ है। और ये चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण है। श्री चैतन्य चरितामृत में प्रमाण आता है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। जब भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के अंग की कांति और उनकी भावना को लेकर प्रकट होते हैं तो चैतन्य महाप्रभु कहलाते हैं। तो अब अगर मन में ये प्रश्न उठे कि श्री कृष्ण और फिर चैतन्य महाप्रभु में अंतर क्या है, तो अंतर बस इतना है कि चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी का भाव लिया है और उनके जैसा रंग लिया है। बस, बाकी कुछ अंतर नहीं, केवल भाव और शरीर की कांति का अंतर है। तो भगवान ने ऐसा रूप क्यों लिया? इसके कई कारण हैं, जिनमें से एक है कि 5000 वर्ष पूर्व जब भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए तो उन्होंने अर्जुन से कहा था कि सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि हे अर्जुन, सारे धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। तो भगवान ने कृपा तो करी है हम सबके ऊपर अर्जुन के माध्यम से, हम सबको दिव्य ज्ञान देकर, परंतु एक कठिन शर्त भी रखी कि मेरी शरण में आओ। किंतु हम जानते हैं कि ये बहुत कठिन है और भगवान को भी लगा कि कलियुगी जीव के लिए ये इतना आसान नहीं। इसलिए उन्होंने एक बहुत ही करुण रूप धारण किया श्री चैतन्य महाप्रभु का। इनका करुण कृपालु रूप महावदन न्याय है। यह अत्यंत ही उदार और करुण है, क्योंकि इन्होंने कभी भी कोई शर्त नहीं रखी हमारे सामने। इन्होंने केवल कृष्ण प्रेम हर जगह बांट दिया, पात्र अपात्रता न देखते हुए। पापी लोगों को, दुष्ट लोगों को, दुराचारी लोगों को, सज्जन लोगों को, पुण्यवान लोगों को, सभी को कृष्ण प्रेम की लहरों में डुबा दिया हरि नाम संकीर्तन के द्वारा, जो इस कलयुग का युग धर्म है।